Hello everyone. This presentation is for Class 1, subject English Reader. Today's topic is new words, word meaning and book exercise of poem If You Are Happy. In the previous lecture, we read the poem. हमने पिछले लेक्चर में पोएम को रीड किया था and we have sang also. So in this lecture we will be doing the new words, word meaning and book exercise. हम इस लेक्चर में new words करेंगे, word meaning और book exercise भी करेंगे. So this is lecture 2 of poem If You Are Happy. So let's start. टाइटल ऑफ द पोएम इज इफ यू आर हैप्पी, अगर तुम खुश हो. सो ये पोएम हमने कल ही रीड किया था. आज हम इसका बुक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे. स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. सो द फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी. HAPPY, हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. हैप्पी मीन्स खुश. फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी. HAPPY, happy. Happy means खुश. Number 2 is clap. CLAP, clap. CLAP, clap. Clap means ताली. Clap means ताली. Third one is hand. HAND, hand. Hand means हाथ. Hand means हाथ. HAND, hand. Hand means हाथ. Third word is pat. PAT, pat. Pat means थपथपाना. Pat means थपथपाना. Fourth word is pat. PAT, pat. Pat means थपथपाना. Fifth word is knees. KNEES, knees. Knees means घुटना. Knees means घुटना. Sixth word is show. SHOW, show. Show means दिखाओ. Show means दिखाओ. Seventh word is no. KNOW, no. No means पता. No means पता. Eighth word is your. YOUR, your. Your means तुम्हारा. Your means तुम्हारा. So these are the 8 word meanings. We will repeat it again. So the first word is happy. HAPPY, happy. HAPPY, happy. Happy means खुश. Second word is clap. CLAP, clap. Clap means ताली. Third word is hand. HAND, hand. Hand means हाथ. Fourth word is pat. PAT, pat. Pat means थपथपाना. Fifth word is knees. KNEES, knees. Knees means घुटना. Sixth word is show. SHOW, show. Show means दिखाओ. Seventh word is no. KNOW, no. No means पता. Eighth word is your. YOUR, your means तुम्हारा. So these are the word meanings. Let's see the book exercise. इस पोएम के बुक एक्सरसाइज में सर्कल करने वाला भी क्वेश्चन है, where you have to circle whether you are happy or sad and you have to make the faces whether you are sad or happy. That you will do it by yourself. So first question is write a while. Complete the poem using rhyming word. Complete the poem using rhyming word. यहाँ पे एक पोएम दिया गया है and in that poem we have to use a rhyming word. In the previous lectures I told you about what is a rhyming word. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि rhyming word क्या होता है. Rhyming word वो words होते हैं which are same sound word, जिसको बोलते समय same sound निकले, that are called rhyming words. तो हम अब वो fill करेंगे rhyming word. I am repeating again. जो सेम साउंड वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते समय सेम साउंड निकले, दैट आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल बुक, हुक, लुक, टुक, बैट, कैट, रैट. एज यू कैन सी बैट, कैट, रैट, सेम साउंड इज कमिंग. बुक, हुक, टुक, सेम साउंड इज कमिंग. सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. सो द फर्स्ट लाइन इज दिस इज माई doll.
यह मेरी गुड़िया है। Her face is round like a ball. यहाँ पे ऑप्शन गिवन है bell and ball, B-E-L-L bell and B-A-L-L ball. तो हमें किसके राइमिंग होना चाहिए? डॉल. सो डॉल का राइमिंग क्या हो रहा है? बॉल, डॉल, बॉल, डॉल, बॉल. सो हर फेस इज राउंड लाइक अ बॉल. उसका फेस किसकी तरह राउंड है? एक बॉल की तरह राउंड है. डॉल, बॉल. Next one is her dress is red. R-E-D, red. She sleeps in my bed. So the options are bed and bad. So which word is rhyming with red? Red के साथ कौन सा word rhyme कर रहा है? Bed rhyme कर रहा है. So I have written bed. Red, bed. Doll, ball. Doll, ball, red, bed. तो as you can see, doll, ball is a rhyming word, red, bed is a rhyming word. जब हम इनको बोल रहे हैं तो एक जैसी sound आ रही है. Doll, ball, red, bed. So these words are called rhyming words. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस बुक एक्सरसाइज में, इस पोएम के बुक एक्सरसाइज में सर्कल करने वाला भी क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. वो खुद ही करना है. इन विच यू हैव टू मेक हैप्पी फेस और सैड फेस, दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is choose your mood and make up a song for it. Like first one is if you are angry and you know it. तो यहाँ पे खुद से ही इसको सॉन्ग को पूरा करना है, जैसे कि हमने पोएम में किया था. इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स. सो इन द सेम वे हम यहाँ पे कुछ और लाइन यूज करेंगे पोएम के अलावा. पोएम में था क्लैप योर हैंड, पैट योर नीज. हम यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे. सो इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट टैप योर शोल्डर्स. आई हैव रिटन टैप योर shoulders. If you're angry and you know it, tap your shoulders. If you're sad and you know it, nod your head. If you're sad and you know it, nod your head. Third one is, if you're hungry and you know it, turn around. So, I have used these lines to complete the poem. तुम अगर कुछ और लेना चाहते हो, then you can take also. I have taken these lines. If you're angry and you know it, tap your shoulders. If you're sad and you know it, nod your head. If you're hungry and you know it, turn around. So let's see the new words. This is your homework. Learn and write these words in English. नोटबुक में ये होमवर्क है. ये वर्ड्स को अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखना भी है और इसे लर्न भी करना है. So the first word is happy, H-A-P-P-Y, happy. Second word is no, K-N-O-W, no. First word is happy, H-A-P-P-Y, happy. Second word is no, K-N-O-W, no. Third word is clap, C-L-A-P, clap. Fourth word is hands, H-A-N-D-S, hands. Fifth word is show, S-H-O-W, show. Sixth word is knees, K-N-E-E-S, knees. Seventh word is want, W-A-N-T, want, W-A-N-T, want. Eighth word is your, Y-O-U-R, your. Ninth word is really, R-E-A-L-L-Y, really. 10th word is pat, P-A-T, pat. Let's repeat again. First word is happy, H-A-P-P-Y, happy. H-A-P-P-Y, happy. Happy means खुश. Second word is no, K-N-O-W, no. K-N-O-W, no. No means पता या कुछ पता होना. Third one word is clap, C-L-A-P, clap. Clap means हाथ. Sorry, clap means ताली. Clap means ताली. Third word is clap, C-L-A-P, clap. Clap means ताली. Fourth word is hands, H-A-N-D-S, hands. Hands means हाथ.
Fifth word is show. 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 Show means दिखाना. Sixth word is knees. 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 Knees means घुटने. Seventh word is want. 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 Want means चाहिए. Eighth word is your. your. Your means तुम्हारा. Ninth word is really. 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 Tenth word is pat. Pat. Pat means thapana. Pat means thapana. So these are the 10 words. ये as you can see on the screen, एक format like this अपनी copy में इस तरह से format बनाएंगे जैसे कि आपको screen पे दिख रहा है. You will write date, day. In the center you will write the poem and the name of the poem is If You Are Happy. Poem का नाम है If You Are Happy. Then you will write new words. और फिर उसके बाद जो 10 new words है ऐसे numbering लिख के then you will do in your notebook. So इस तरह से अपनी copy में काम को करना है. Thank you and have a nice day. You must have enjoyed watching this video and don't forget to subscribe our channel EdQuark. Thank you.